Is it okay now, Vida? Is it okay now? Okay. So how well are we going to do this? BBA IPM entrance examinations. This is CUSET 2022 has already been launched, and we should be able to. Yes. Am I audible now? I think I'm audible now. मुझे मालूम था. Okay, that was what I was telling you. You have to wait because I refreshed the page and then it must have come. Okay, now CUSET 2022 batch 2 has already been launched. Okay, and it must be coming, Rahul. Now it must be okay, right? It must be okay now. Okay. Free mega workshop on 21st February at 5 p.m. by Alpha Ma'am will be held, and you should join these classes. Okay, BBA Ranker course for 2022 has also been launched. It is time to join now and take your preparations seriously now. IPMAT DUJAT Score Booster course has already been launched on the 18th of February. Okay. And daily at 2 p.m. you have Salik Ahmed Sir's general knowledge sessions. Then daily at 4 p.m. Ruhindeep Kaur Ma'am takes logical reasoning. Monday through Friday at 12:30, Alpa Ma'am takes your English classes. And Ankur Tamar Sir comes at 11 a.m. with mathematics. These are your faculties: Ruhindeep Kaur Ma'am, Rabia Zara Khan Ma'am, Salik Ahmed Sir, me, and Ankur Tamar Sir. Now, Suday is 22. Okay. Now try this. Arabic mathematics, read this. What about this question? Arabic mathematicians made tremendous contributions to cryptanalysis. What do you think was the answer for this? See, you get your passages at such levels only. You don't get bigger passages. So, read? Now what about this? पहले क्वेश्चन ही देख लोगे राघव तो आंसर दे दोगे. ऐसी हो जाता है. क्वेश्चन से आंसर करते हैं. इज दैट द अप्रोच यू टेक राघव? इज दैट द अप्रोच यू टेक? अगर वो अप्रोच से करते हो तो शायद गलत करते हो. अगर तुम्हारे लिए काम कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है. अगर काम नहीं करता तो क्वेश्चन पहले देखने का परेशानी है. ठीक है, देख सकते हो कि क्वेश्चन क्या है, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन देके आंसर ढूंढना है तो उतना ही आसान होता. मैं सिर्फ ढूंढ सकता हूं, क्वेश्चन देखा, आंसर ढूंढा, लिख दिया, पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी. ठीक है, ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता. बट क्वेश्चंस आर नॉट लाइक दैट. एट दिस लेवल दे आर स्लाइटली डिफरेंट. तो यू हैव टू रीड द पैसेज वंस एटलीस्ट. मैं क्या सजेस्ट करता हूं, मैं बोलता हूं आप साइमल्टेनियस रीडिंग करो. मैं बोलता हूं कि पैसेज के साथ साथ क्वेश्चंस भी देखो, जो कि यहां पॉसिबल नहीं है, इस सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है. वरना मैं क्या करता, एक ही जगह पे तुमको पैसेज और एक ही जगह क्वेश्चन रखता. क्वेश्चन को हम लोग आगे पीछे कर लेते, देख लेते एक बार, उसके बाद इस पे आते. यहाँ वो परेशानी है. मैं माना क्वेश्चन देखा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन देकर आंसर ढूंढने वाला काम मत करना. पैसेज के साथ साथ क्वेश्चन पढ़ोगे तो यूल बी बेटर ऑफ. गेट द आइडिया? नाउ रीड. चलो आप रीड कर लो. मेरी परेशानी तुमको समझ में आ रही है. आई कैन नॉट शो द क्वेश्चन एंड पैसेज टुगेदर. पढ़ लो, इसीलिए उल्टा करेंगे काम. लेकिन अपने मॉक टेस्ट्स में रीड द पैसेज एंड द क्वेश्चंस टुगेदर. ठीक है, हमेशा उसको बनाए रखना. इट विल ऑलवेज हेल्प यू. ठीक है, नाउ रीड दिस. डन? Have you read this? Now let's move to the
next slide. And अच्छा अच्छा ठीक है राघव बेटा, समझ में नहीं आता बेटा, ये हम जो पढ़ते हैं ना उसमें दिक्कत होती है। मैंने ये जो मैसेज तुम्हारे पास लेट से आता है, मेरा मेरा बोलना लेट से जाता है, तो वो मुश्किल ही होता है। Now, try this. All Al-Kindi's contribution has been acknowledged in the field of what? Encrypting messages, cryptanalysis, language analysis, preparing a manuscript. What do you think is the meaning? Al-Kindi's contribution has been acknowledged in the field of what? It was a very easy question. It is a very easy question. It is cryptanalysis, not encrypting messages. Encrypting messages was done by the Prophet. So cryptanalysis was done by Al-Kindi. Okay, not this. This looks very close, but then he wasn't encrypting messages. वो कोड में नहीं डाल रहा था मैसेज को कोड में तो प्रॉफिट ने डाला था, उसका एनालिसिस किया एल्किंडी ने. Okay, so the answer is B. To the next question, the word in the last paragraph that means coding of a clear text. Coding of a clear text. कौन सा वर्ड है? Deciphering, coding of clear text, deciphering, encrypted, revolution, scrambled. कौन सा वर्ड सही है? यहाँ एक से ज़्यादा वर्ड हमको तंग करेगा, लेकिन लास्ट पैराग्राफ में जो वर्ड था, तो किस वर्ड का मीनिंग है वो? देखो पैसेज देखो, कौन सा, ये देखना कौन सा वर्ड है, देख लो, एंड देन कम टू द क्वेश्चन. What do you think is the answer? This one was very easy. B, absolutely. It is encrypted. कोडिंग करना, एनक्रिप्ट करना, डिसाइफरिंग करना, डीकोड करना. डिसाइफरिंग करना, डीकोड करना. ना स्क्रैम्बल करने का मतलब भी होता है, स्क्रैम्बल करने का भी मतलब होता है कोडिंग करना, लेकिन वो वर्ड नहीं था हमारे पास में. ठीक है. सो कम टू द नेक्स्ट वन. द होली कुरान डॉक्यूमेंट्स द मैसेज ऑफ, पता नहीं किन का मैसेज था वो, प्रॉफिट मोहम्मद का, आर्चएंजल गैब्रियल का, अरबिक हिम्स का, मुस्लिम स्कॉलर्स का, किन के मैसेज किन का है कुरान में? ध्यान से, दिस क्वेश्चन कैन बी कंफ्यूजिंग. दिस क्वेश्चन कैन बी कंफ्यूजिंग. कौन सा आंसर है बताना. द होली कुरान डॉक्यूमेंट्स द मैसेज ऑफ, ये दोनों तो नहीं है, ये दोनों तो नहीं है, इन दोनों में से कोई है, इन दोनों में से कोई है, तो कौन सा आंसर है बताना.
नहीं, ये आर्चेंजल गैब्रियल का था जिसको ने प्रॉफिट मोहम्मद ने लिखा। आर्चेंजल गैब्रियल का था वो। होली कुरान डॉक्यूमेंट्स द मैसेज ऑफ आर्चेंजल गैब्रियल। ठीक है। Now to the next question. The art of deciphering scrambled messages has its root in which language? किस में? The art of deciphering scrambled messages has its root in, क्वेश्चन को ढंग से समझना, has its root in, root कहाँ है बताया था वो, art of deciphering scrambled messages is given where? पैसेज में क्या लिखा था? क्रिप्ट एनालिसिस तो जो हम एनालिसिस करते हैं, अरबिक लैंग्वेज का लिखा था, ठीक है, रिलीजन लिखा हुआ था। विच ऑफ दीज टू? रूट कहाँ ओरिजिनेट किया? वेयर डिड इट ओरिजिनेट? इट ओरिजिनेटेड इन रिलीजन। इट ओरिजिनेटेड इन रिलीजन, राइट? अच्छा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देर आर 6 पार्ट्स मार्क्ड 6 S1 S6 PQRS। S1 एंड S6 आर फिक्स्ड। ये जंबल्ड पैराग्राफ है। S1 S6 आर फिक्स्ड, सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव बीन जंबल्ड अप, रीअरेंज दीस पार्ट्स टू चूज द प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, इसको जरा देखते हैं। ठीक है ना, लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस इज फिक्स्ड एंड दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड। आई डोंट नो हाउ यू डू इट। ठीक है, आप कैसे करते हो ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आई विल टेल यू द बेस्ट अप्रोच इज टू गो टू द ऑप्शंस फर्स्ट। ऑप्शन में ही देख लो। देखो यहां पर मैं ऑप्शन में आर नहीं है, तो मतलब आर से तो शुरू होना है ही नहीं। ठीक है, पी पे से 2 ऑप्शन है, क्यू और एस से है। तो लेट अस स्टार्ट विद पी एंड सी की, पी कनेक्ट कर जाए कि नहीं, S1 के साथ कनेक्ट कर जाए कि नहीं। अगर कर जाएगा देन आई हैव 2 ऑप्शंस कैन बी एलिमिनेटेड और एवेल्युएटेड जस्ट बाय लुकिंग एट पी से स्टार्ट हो सकता है कि नहीं। ओके, अगर हो सकता है तो पी से ही आगे पढ़ के देख लेंगे पी के बाद क्या आएगा। लुकिंग फॉर अ कंपल्सरी पेयर इज अनदर गुड थिंग वी कैन डू। ओके, एंड ऑलवेज गो फ्रॉम वन सेंटेंस टू द अदर थ्रू लॉजिक। क्वेश्चंस पूछ के उसके जवाब के अनुसार जाना चाहिए। ओके, व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर फॉर दिस? अगर पी से शुरू नहीं होगा तो आंसर ही तुम्हारा दूसरा ही आंसर में चला जाएगा, तो 2 ऑप्शन पट से छोड़ सकता हो। Sneha says D. Okay, so let's see. Most of the perishable foods are shipped by refrigerator ships. उसके बाद shipped by P से भी लिख सकता हूँ, Q से शुरू कर सकता हूँ। तो some of those foods are bananas, perishable goods. some of ये भी हो सकता है सर। फिर एस में देखता हूं, द कूल टेम्परेचर्स कीप द बनानास फ्रॉम गेटिंग राइप ड्यूरिंग द ट्रिप। सर बनानास की बात नहीं हुई थी, पक्का डी से शुरू नहीं हो सकता। S1 के साथ डी शुरू नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आप फूड्स के बनानास के बारे में इंट्रोडक्शन नहीं है। अब आता है कि पी के बाद क्यू या पी के बाद एस देखते हैं। अगर वो भी काम नहीं करेगा, पी के बाद क्यू और एस काम नहीं करेगा, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। Now they are placed in the refrigerated hold of the ship. Okay, all the perishable goods. Well, Q. Some of those foods are bananas. हो सकता है सारे को रखते हैं रेफ्रिजरेटेड होल्ड में, उसमें से कुछ बनानास होते हैं। फिर आर, एज द ग्रीन बनानास आर लोडेड, अ मैन वॉचेस क्लोजली द साइंस ऑफ येलो ऑन देम। ठीक है, उसके बाद एस भी देखो, द कूल टेम्परेचर्स कीप द बनानास फ्रॉम गेटिंग राइप ड्यूरिंग द ट्रिप। ठीक है, तो सर ये खराब तो नहीं लग रहा, PQRS तो खराब तो नहीं लग रहा। फिर इसको भी देखते हैं, PS तो फिर हो नहीं सकता, PQRS सही तो लग रहा है। Q के बाद P पढ़ के देखना। ओके, सम ऑफ दीज फूड्स आर बनानास, पेरिशेबल गुड्स, पूरे गुड्स के बारे में पहले बात हुआ। उसके बाद मैं P बोल रहा हूँ, दे आर प्लेस, सम ऑफ दीज फूड्स आर बनानास, एंड देन आई से P, दे आर प्लेस्ड इन द रेफ्रिजरेटेड होल्ड ऑफ द शिप। ओके, और P, और उसके बाद S, द कूल टेम्परेचर कीप द बनानास फ्रॉम गेटिंग राइप, QPS, और उसके बाद R, एज द ग्रीन बनानास आर लोडेड, अ मैन वॉचेस क्लोजली। और लास्ट वाला देखना, राइप बनानास आर पुअर ट्रैवलर्स एंड इवन द राइप बनाना एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप कैन स्पॉइल अ होल शिपलोड ऑफ फ्रूट। ओके, येलो वाला साइन जरूर देखता है, क्योंकि राइप बनानास, क्योंकि तो R लास्ट में ही होना चाहिए। तो अब बताओ, R लास्ट के साथ में तो Q ही काम कर देगा। एब्सोल्युटली, दैट इज हाउ वी डू इट। ट्राई दिस क्वेश्चन ऑल्सो। यहां 1 and 6 फिक्स्ड है, 1 and 6 फिक्स्ड है, कोशिश करना इसमें।
सर क्यू से, वेरी गुड, विच वन इज द करेक्ट, वेरी नाइसली डन, वेरी नाइसली डन सर। क्यू से ही लास्ट होना चाहिए, तब तो ये तीनों तो यही तीन में से आंसर हो सकता है, और शुरू होना चाहिए आर से, ठीक है, आर से शुरू होकर क्यू में खत्म होना, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एब्सोल्युटली, वेरी नाइसली डन, बहुत बढ़िया। ट्राई दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम गिवन हियर? द स्पीकर गेव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्री। A bird flies high, so what kind of view? What is a bird's eye view? What do you think is the answer? There are two good answers, but then a bird's eye view. Okay. Rahul wants to go with A. Dhruv says B. A general view. Okay, A. Very good. Most of you chose correctly. Now this looks confusing. Look at this. It's not a biased view. It's not. It has got a positive meaning. A bird's eye view is a complete view, but not paying attention to details, A bird's eye view, it can see the entire thing. A bird can see the entire thing. Okay, and then you have to focus on a particular thing. You can see the entire thing is the view, is the meaning here. So general view is the correct one. A detailed presentation is a different thing. For that, if you have to get into every detail, and then it will not work with bird's eye view. का मतलब ये होता है general view करना. Good. Try the next question. Which of the following is the antonym of the word written in the capital letters in the sentence? Way down south, down Florida way, the land is fecund. The air is ripe with growth. The land is fecund. The air is ripe with growth. So how should it be? Antonym. We are supposed to give the antonym, not the synonym. Okay. You have to give me the antonym of fecund. Barren. Antonym of this one is absolutely, it is barren, without growth. Fecundity is fertility. Fecund hona, fertile hona, absolutely. The opposite is barren. What is bodacious? Bodacious is something that is admirable, excellent. But then it is not in the proper, it is not in proper language. It is informal. We say bodacious for something that is excellent. Something that is excellent. Okay. Then you have benign. Benign is kind or soft, not harsh. Flamboyant is somebody who shows off. Okay. Who shows off is flamboyant, showy. Highly fertile. Absolutely. Got that. Now, in the sentence, identify the segment which contains the grammatical error. If the sentence has no error, then select no error. Okay. What do you think? Good afternoon, beta, Tarun and Rahul. Okay. Now, tell me the meaning of this. Where do we have the error? What do you think is the error? Don't. Okay, Rahul Gupta says D, sir. I think there is no error. Okay. It requires a lot of guts to say that there is no error. Usually what we do is, we don't think of no error as an option at all. No error कोई option ही नहीं है, ऐसे ही सोच के काम करते हैं. But Rahul is correct, absolutely correct. It has got no error. For some people, the word England may still conjure up images of pretty gardens and tea parties. Absolutely. The sentence has got no error. Now try this again.
June is upset at him, saying that India's millennial population confronts fewer incidents of domestic violence than Russia. So she leaves the apartment with her sister in anger. See, I'll give you some clues, okay? Usually, subject-verb agreement is an error. So these always, you subject a sentence to these filters always, कभी भी नहीं छोड़ते. Subject verb agreement जरूर देखते हैं, modifiers जरूर देखते हैं, symmetry जरूर देखते हैं, और prepositions जरूर देखेंगे. Prepositions जरूर देखेंगे. ठीक है? तो somebody said Prerna Verma, not getting it, sir. Okay. So let's take subject verb agreement first. Okay, that India's millennial population conference, this is correct. Population is singular and front. June is upset, correct. So she leaves the apartment with her sister in anger. Okay, this is also correct. All of them are written in the present tense, so there is no issue. Modifier errors, yes, there could have been a modifier error. I'll come to that later. Symmetry error, there doesn't seem to be any symmetrical error. Preposition error, so there seems to be a preposition. You get upset with somebody. You get upset with somebody, not at somebody. Prepositions can be one handful. They are tough. Okay, so always check a sentence for prepositions. For a moment, even I felt there is no error. And then once I started reading the options, I found out, okay, with him. But there could also be this problem of symmetry. Or there could also be a problem of symmetry. The sentence could be right. The sentence may not be right. I'm asking you the question. Tell me whether this comparison is correct or incorrect. Okay. India's millennial population confronts fewer incidents of domestic violence than Russia. Is it correct? Yeah, I'm getting your comment better, Nikhil. I can see your comment. With him. Yeah, I saw that. You gave the right answer. Yes, I saw that. My question is the sentence correct in terms of symmetry? Is the symmetrical balance maintained? India's millennial population, then Russia, or then Russia's? Where is the apostrophe is? That is also an error. I think that was lost in typing. Okay, I think this was lost in typing, but this should have been Russia's, because we are comparing India's with Russia's. You cannot say Russia. Is that clear, guys? Is that clear? So this, I think the apostrophe s was missed due to typographical error. Okay, but the sentence is wrong. That's what, sir, how do you do it? I'm looking for four options, four of them. I'm looking for subject verb agreement, modifiers, symmetry, and prepositions. 4. I would do that all to all my sentences. Whether the sentence is a small one or a longer one, I don't care. I'll subject each sentence to these 4 filters. Yes? Okay. So, and the answer is correct. Okay. So that is all for today. Thank you all very much for coming to the session. Please like, share and subscribe, and ask your friends also to join, and then we can have enriching sessions. I can teach you some concepts like how to be critical when you're doing a question all the time, so that your mind and eyes are open. Okay. And you don't have to suffer, say, failures. Okay, so the best thing to do is be critical when you're going for an exam and say that, okay,
I know this. I'm going to do these 4 things for every sentence I get. Okay. Thank you all very much. See you in the next class, beta. Bye.